नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज रविवार 17 दिसंबर 2022 है। हम कल यानी कि 18 दिसंबर सोमवार में निफ्टी का क्या रुख बन सकता है उसकी बात करेंगे। बृहस्पतिवार को जब हम शुक्रवार की ट्रेडिंग की बात कर रहे थे तो ये समझ में आया कि बाज़ार में कोई हल्का बदलाव आ रहा है, या तो हम किसी करेक्शन में हैं या कम से कम मामूली करेक्शन में तो अवश्य हैं। अब ये करेक्शन कहाँ ख़त्म होता है ये पहले से कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बार बार इस वीडियो में बताता रहता हूँ कि हम भविष्य को कभी भी नहीं बता पाते हैं। ये जो लोग क्लेम करते हैं, कुछ कंसल्टेंट्स, कुछ एडवाइज़र्स या कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स, कि हम आपको फ्यूचर बता देंगे, एक्स अमाउंट हमको दे दीजिए, वो बिल्कुल गलत है। कोई भी नहीं भविष्य बता सकता है। तो हमारा काम होता है कि हम क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पर बात करें और उस हिसाब से ट्रेड करें। एक बार बाज़ार का रुख मंदी का हो गया है तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये मंदी जब ख़त्म होगी तो ही हमारा ख़रीदने का माहौल बनेगा। अब चूँकि हम करेक्शन में हैं, ये सोमवार को ख़त्म हो सकती है, बुधवार को हो सकती है, अगले सप्ताह हो सकती है, मैं कह नहीं सकता कब होगी। पर हम चार्ट्स पर इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद यहाँ लो बन रहा है, शायद यहाँ सपोर्ट आ रहा है। जब वो सपोर्ट दिखने लगे तो फिर मेरे लिए तो अभी भी सिर्फ बाइंग ही बनती है और हड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये बाइंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम घुस जाएंगे बाज़ार में और अनावश्यक रूप से ख़रीद लेंगे जबकि माहौल बना नहीं है ख़रीदने का। तो वो बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि जब माहौल बनेगा तब खरीदेंगे। तो सोमवार के लिए कोई विशेष बात रही नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इस समय तो सोमवार का कोई ट्रेडिंग रुख बन रहा है। दोपहर में शाम तक कोई सपोर्ट लेवल्स अगर आएंगे तो इंट्राडे या एक दिन का ट्रेड शायद लॉन्ग साइड में बन जाएगा और वो सोमवार को ही देखा जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good morning. Today is Sunday, 17th December 2022, and we are talking about the markets, or rather the market action for 18th December, the Monday. Now, on Thursday, when I was talking to you about the Friday market action, I had suggested that we are now entering into some kind of correction. Friday is likely to be choppy and probably untradeable. That correction view continues. Now the market is correcting, we can't do anything about it. Even if I had a view, and I did, that we will make new highs, that the market has negated that view. And remember, it is the market which is supreme. My views on the market are worth nothing because the market decides what it wants to do. I only have a view, so that if the market goes according to my view, I take a trade. If it's doing its own thing, usually I keep quiet. There's no rush. There are opportunities all the time in the markets. You just have to be patient. So for Monday, the view continues to be, we are in a correction. This correction can be deep, it can be shallow, it can find support somewhere. All of these questions are questions which I have no answers for, and I don't even seek answers for the future, because this means talking about the future. And I have told you in many of my videos, no one knows the future. Those consultants, advisors, service providers who claim to tell you, we will tell you what will happen tomorrow or day after tomorrow or at 2 p.m. today, XP, they are not saying the correct things. Nobody can tell the future. So how do we trade? We trade based on possibilities. We have different scenarios and we say, if this scenario happens, this is comfortable to my psychology, to my way of thinking, and I will then take action. If it doesn't happen, I don't do anything. So if the market finds some stability, I will start looking for a buying opportunity, maybe intraday, maybe for a couple of days, whatever. If the market doesn't show signs of any stability, doesn't show signs of visible support, I'm not doing anything. So I'm only sharing what my plans for the Nifty are. Naturally, your plans may be different and the market's plans may be even more different. So we'll take it easy, enjoy yourself, have a good time. Thank you for watching this video. Jai Hind.